All right, so welcome in our weekly webinar, Market Masterclass with Religare. So in this webinar, for those who are joining us for the first time, a quick update means what is the reason, how it flows. So basically, it is designed for uh, kind of like giving a perspective how one should plan their strategy for the next week for both the key indices, Nifty, banking index, stocks to focus, sectors to prefer. Everything we will cover in next 20 minutes, followed by a quick feedback poll and with the Q&A. So in case if you have any questions related to any particular sector, which we might have skipped or missed during the presentation, or any particular theme that you would like to explore more, obviously we can talk during the Q&A. तो आप सभी का स्वागत है हमारे वीकली वेबिनार में और इस वेबिनार का मकसद बेसिकली ये है कि आप प्रिपेयर हो जाएं नेक्स्ट वीक के लिए। आज हफ्ते का एंड हुआ है, अब नेक्स्ट वीक किस तरीके से प्रिपेयर होना है उसके बारे में हम बात करेंगे। ज्यादा फोकस एरिया वो इनिशियली एक ब्रीफ होगा इस वीक की परफॉर्मेंस का, एंड देन सारा टाइम हम बात करेंगे लार्जली कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या करना है। सो बी इट indices, nifties, banking index, sectors, stocks, उन सभी में हम बात करने वाले हैं। So let's start. Yes, first a disclaimer that as I mentioned that this webinar is to give you insight, but it's not a trading or investment recommendation. So before making any decision based on the information that we share here today, प्लीज चेक विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो देखिए, जो भी हम बात करने वाले हैं वो कोई भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। तो जब भी आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करने की सोचें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर हेल्प लें। Now this is the snapshot for the week, second successive week of advance, almost 1% kind of gains for both Nifty and Sensex. Majority of sectors on the positive side, barring the key sector, banking, which was almost flat, marginally lower than media also. But auto, realty, FMCG, IT, and metals, they all did well. Auto, obviously, very strong traction after the recent consolidation. And as you can see, among the top 5 gainers in the Nifty 50 basket, 3 names from the auto pack. So Maruti, if you remember, last week we've discussed about Maruti. Among the 3 stocks that we have discussed, Maruti was there in that list. So it gained 11% this week. Hero Motoco, Bajaj Auto. Apart from that, in the FMCG space, Nestle and HUL, they were among the top 5 gainers. Losing side, ITC, again, interestingly, because you might have heard about this new GST reform wherein we are talking about higher GST slabs for SIM goods. So that's the reason why ITC was under pressure. Then we have Coal India, BEL, L&T, and Geo Finance. So not major cut, but yeah, 2.5% kind of a cut in all the other losers. So this is how the week panned out, when it comes to the overall markets. तो देखिए, ये पूरे मार्केट का लेखा जोखा पूरे हफ्ते का कि लास्ट वीक हमने करीब करीब 1% के गेन किए थे, इस वीक भी हमने 1% के गेन के साथ क्लोज किया। बट इंटरेस्टिंग क्या था कि ज्यादातर सेक्टर आपको पॉजिटिव साइड पे नजर आएंगे। बैंकिंग की अंडर परफॉर्मेंस की वजह से गेन्स कैप्ड रहे, राइट। बैंकिंग मार्जिनली कट के साथ टॉप 5 गेनर लूजर्स में आपने गेनर्स में देखा कि ऑटो काउंटर्स और एफएमसीजी काउंटर्स ये रहे, और वहीं पे अक्रॉस द बोर्ड आपने बाकी सभी सेक्टर्स में भी प्रॉफिट टेकिंग देखी, जहां पे कि ITC, कोल इंडिया, BEL, L&T, जियो फाइनेंस टॉप 5 लूजर्स में रहे। नाउ लेट्स जंप टू द critical part, how we are seeing the markets ahead. Right, so last week we were here, right?
Then over the weekend, means post this GST reform announcement, Nifty made a gap up start on Monday, followed by a gradual move. But the final two trading sessions, we were seeing some profit taking, and it was a sharp profit taking on Friday, which engulfed the gain of last three, four trading session. Now the gap area is left, right? So what is important next week? Again, we are closer to this 20 EMA, this yellow line, as you can see. It's a critical support or resistance basis where we are trading. So in current scenario, we are trading above this yellow line. It means it should act as a support. The 24,800 minor support, but major is going to be this area, 24,600, this gap area, because the moment we are going to slip below this mark, then this gap is likely to be filled, right? So means in short, the momentum or recovery that we were seeing, it would fade out once Nifty closes decisively below 24,800 mark. Okay, the 24,600 and then 24,350, that will be the respective support zone that we have for the indices. Upside 25,250, this previous swing high, the major resistance will remain at that area. Obviously, the immediate swing high will continue to be the first hurdle, means around 25,150. But major is going to be this 25,250 area. And once we cross that, then 25,400. So as of now, what all indication that we have last week, if you remember, we were talking about indications are in the favor of a rebound, right? But the way Nifty ended on Friday, this indicate potential of further profit taking or consolidation. Recovery seems difficult, means a swift recovery or vertical recovery, provided something very positive, uh, clues that we get over the weekend. Indications are in the favor that profit taking might continue and we might fill this gap also. So what this means is that are we going to see outrightly bearish tone in the market? No. Answer is we may see certain pockets underperforming. Banking is among the critical sector wherein we are seeing underperformance, and the other is IT, the top two sectors basically. So until we see the underperformance continuing from the top two sectors, other sectors, be it auto, metal, realty, FMCG, they can't help the index to sustain at the higher levels. They may trigger any intermediate rebound the way they did of late, but sustainability and momentum is something that goes with banking and IT. If not IT, at least banking should be there. I hope it is clear. 24,800, this yellow line is immediate support, but indications are in the favor that we might fill this gap and inch toward 24,600. But which means that there will be further consolidation in the market, or the momentum that we were seeing might fade out. This is the reason, banking index is the reason why we are saying this. First हिंदी में जो हमने मिस किया, तो देखिए लास्ट वीक जब हम यहाँ पे क्लोज हुए थे ना 24,600 के पास पे, तो हमने बात की थी कि इंडिकेशन यहाँ से ये है कि रीबाउंड एक्सटेंड हो सकता है. तो मंडे के दिन गैप अप स्टार्ट हुए, उसके बाद से ठीक ठाक से रिकवरी आई. 250 का टारगेट था अपना कि वहां तक तो ऑलमोस्ट 200 तक आप पहुंच गए थे. वहां से एक प्रॉफिट टेकिंग या करेक्शन आप कह सकते हैं आज की सेशन में आई है. 24,800 जो ये येलो लाइन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है मेन क्रिटिकल. ये अगर ब्रेक हो गया तो जो ये आप खाली एरिया देख रहे हैं निफ्टी में, बिकॉज पहले हम यहाँ थे फ्राइडे को, उसके बाद फिर गैप अप हुआ, तो इस एरिया को फिल करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है, जो कि करीब 24,600 के पास है, राइट. तो टोन अभी कॉशियस है. अगर 24,800 जो कि काफी नजदीक है, करीब 70-80 पॉइंट ही रह गए हैं यहाँ से, वो अगर ब्रेक हुआ तो फिर प्रेशर रहेगा मार्केट में.
Okay. So reason behind this weakness is this. Uh, I guess if you are facing any issue, you can write it in the chat box instead of using chat option. कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज एक सेकेंड। ओके देयर इज। अच्छा, कर्सर नहीं दिख रहा था आपको? ओके सॉरी। तो ये आई एम श्योर अब दिख रहा होगा आपको कर्सर मेरा। तो जैसे कि अगर लेट्स गो बैक एंड सी, यहाँ पे आई वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस येलो लाइन, जिन्होंने मिस किया कि 24,800 इस एरिया के पास है। 870 के पास हम है, और नीचे पे फिर ये 24,600। ठीक है। तो नाउ लेट्स come back to banking now. So banking also opened, strongly the start of the week, but it couldn't sustain, right? It filled, not only filled the gap, means like Nifty, we still have the gap open, right? As we could see on the daily chart. But here, we not only filled the gap, but inched closer to the previous swing low and the 100 EMA as well. So what this means is that banking is underperforming. And in banking, when we say, then we are largely talking about the private banking majors because they have the maximum weight in the index. So ICICI, HDFC, Axis, Kotak, IndusInd, all are indicating largely sideways to negative tone. 54,900, like we were discussing last week also. This area, this green line, this is critical. If we slip below this mark, then probably banking underperformance may extend, with 54,000, 54,100 being the next major support. Means roughly around 1,000 point kind of a correction from that area. Somehow, in case if we manage to hold this, then the recent swing high close to around 56,200 and then 56,700 for the week will be the two key resistances for the banking index. What all indication that we have, like what we shared about the private banking majors, HDFC specifically, ICICI is still looking okay. HDFC, Kotak, Axis, IndusInd, all are indicating negativity or bit of a profit taking or decline. So 54,900 is something that market is going to test. If we decisively close below this mark, then probably Nifty also would fill that gap and inch toward 24,600. So देखिए, निफ्टी जो कि 2 वीक से पॉजिटिव क्लोज हो रहा है, उसमें बैंकिंग का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और बैंकिंग और फाइनेंशियल्स, और अगर हम आईटी को जोड़ दें तो 55 से 60% का वेट इंडेक्स का इनमें हो जाता है। निफ्टी में इनका वेटेज इतना है। तो जो की सेक्टर्स ही अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो निफ्टी कैसे बढ़ेगा? तो यही चैलेंज अभी बैंकिंग इंडेक्स में देखने को मिल रहा है कि एक तो इसने पार्टिसिपेट नहीं किया और गिरावट के में ज्यादा गिर रहा है। तो डबल प्रॉब्लम है हमारे साथ। आईटी पहले ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे 54,900 को ध्यान रखना है अपने को। अगर 54,900 गया, ये ग्रीन लाइन जहाँ पे आपकी प्लेस्ड है 55,000 54,900 के पास, ये गई तो फिर 1,000 पॉइंट के करीब करेक्शन बैंकिंग इंडेक्स में आपको देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली वो ग्रेजुअल हो या वन डे में हो, ये कहना बहुत मुश्किल है, बट यस, प्रेशर रहेगा। तो बैंकिंग में, आईटी में अभी लॉन्ग साइड की पोजीशन, एग्रेसिव लॉन्ग की पोजीशन इज समथिंग दैट यू शुड अवॉइड, राइट? सो बैंक का हो गया, निफ्टी का हो गया। लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक्स। Ashok Leyland. Last week we talked about Maruti. It was among the top gainers. Ashok Leyland
a strong performer within the CV space, a steady uptrend. As you can see here, it was more of a consolidation phase, but in the last several months, we were seeing gradual recovery. And this week, we saw a decisive breakout from the previous swing high, and the stock is inching towards its record highs. Though we are seeing a bit of profit taking from the last 2-3 trading session, but it is okay, it is normal. But the way we saw the stock, breaking its record high with the kind of volumes, this indicates the positive tone is here to stay. So auto is likely to continue its outperformance. So one can continue to look for accumulation in top names like Ashok Leyland, M&M, TVS, Eicher, Maruti. Right? Bajaj Auto, Hero Motoko, they are also seeing recovery, but they are comparatively, means Bajaj Auto is still you can consider, but for the outperformance, if you remember that we always talk about the relative performance. The stock which are anyways trading closer to their 52-week high, the tendency of them continuing this trend is higher. So अशोक लेलैंड लास्ट वीक हमने बात की देखी मारुति की, और इस वीक हम बात कर रहे हैं अशोक लेलैंड की. यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, काफी महीने की कंसोलिडेशन एंड हुई है. वॉल्यूम्स, ये जो आप देख रहे हैं नीचे, ये वॉल्यूम का ग्राफ है. आप देखेंगे तो बहुत सारे महीनों में इतना वॉल्यूम कभी नहीं हुआ. ये बीच में बहुत महीने पहले एक बार हुआ था, बट उससे ज्यादा वॉल्यूम इस बार हुआ है बाय पे जब ब्रेकआउट आया. तो इस मीन्स किसी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जिनके पोजिशनिंग में स्ट्रेंथ होती है, उन्होंने बाय किया, उन्होंने ब्रेकआउट ट्रिगर किया है. तो यूजुअली फिजल आउट नहीं होता है, और होता भी है तो फिर आपको निकलने का मौका मिलेगा. इसमें नहीं होगा कि एक अचानक से ही कुछ मेजर डिक्लाइन. तो 124-25 का जोन है, दैट इज अ गुड सपोर्ट एरिया फॉर अशोक लेलैंड. तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस के लिए, एक्यूमुलेशन के लिए देखा जा सकता है. राइट? ओके. नेक्स्ट आते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज. देखिए, auto ancillary and related stocks. Here we feel that even if, let's say, the market underperforms, possibility of outperformance is going to remain high in this space. So when it comes to buying, the focus area should be more on the sectors, themes which are outperforming or showing sign of relative recovery or rebound. So Exide, as you can see, a strong corrective phase, means from 620 to almost 340, 330 lows, right? And then this very tight range consolidation for almost a month. And then we are seeing this recovery with volumes. So what this indicates is that possibility of this prolonged correction is over now, and we can gradually see the stock, witnessing the recovery with 440, 460 being the positional target zone. What is the good part? That we have support very close to our current levels. The downside seems capped, and we have potential of probably a reversal also, but at least for a rebound that is there on the charts. राइट? तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ऑटो ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, आने वाले टाइम में भी उसका रहेगा. तो ऑटो के साथ के रिलेटेड जो आपके सेक्टर्स आ जाते हैं, चाहे वो आपके बैटरी हो, टायर्स हो, और पार्ट्स बनाने वाले हो, तो उसी में जैसे कि एक्साइड इंडस्ट्रीज काफी मेजर करेक्शन झेलने के बाद अब यहाँ पे इंडिकेशन बन रहा है कि एक रिकवरी का, एक रिवर्सल का. वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, बेस अच्छा फॉर्म हुआ है, प्राइस एक्शन अच्छा हुआ है इस वीक में. तो सारे इंडिकेशन ये है कि ये रिकवरी स्ट्रेंथन होगी और स्टॉक ग्रेजुअली आपको करीब 440 और शायद उससे ऊपर के लेवल देखने को मिल जाए. सपोर्ट आपका ये जो ग्रीन लाइन है करीब 380 के पास, 375 के पास, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की तरह करेगी.
यहाँ पे भी आप फोकस कर सकते हैं फॉर लॉन्ग पोजीशंस. Lastly on the list is stock wherein one can look for shorting opportunity in case, let's say, the market tone uh, reverses and we slip below 24,800 mark. Then we should have certain candidates wherein one should look for shorting opportunity also. So Asian Paints, we were seeing gradual recovery, rebound, but this week we've inched closer to this multiple moving averages resistance on the weekly chart, which also coincides with the resistance zone of the price action area, right? So we have multiple resistances around this 2600, 2620 zone, and after testing that mark, we've drifted lower. So possibility of further correction and profit taking is high in Asian Paints from the current level. So for shorting position, in case if the markets gives you the opportunity, it could be one of the candidates. So IndusInd Bank, Asian Paints are some of the weak counters that we have on daily and weekly charts. तो देखिए हमने दो स्टॉक्स की तो बात कर ली, अशोक लेलैंड की और एक्साइड की, जहां पे की स्ट्रेंथ दिख रही है. अगर मार्केट में प्रेशर आता है और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ ढूंढना है, तो जहां पे रेजिस्टेंस है, बिकॉज आप रेजिस्टेंस के पास अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो आपके पास रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल जाता है. एशियन पेंट ऐसा नाम है जहाँ पे एक अच्छी रिकवरी आई थी. जो ये गैप था उसको फिल करने की कोशिश हो रही थी. ऑलमोस्ट अपने जो मूविंग एवरेजेस के रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, जो उसके प्रीवियस कंसोलिडेशन जोन के साथ कोइंसाइड कर रही थी, बट सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से प्रॉफिट टेकिंग आ गई. तो अगर मार्केट में प्रेशर आता है तो हो सकता है प्रॉफिट टेकिंग आने वाले टाइम में और गहरा जाए, तो यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के इंडिकेशन हो सकते हैं, राइट. तो नेट नेट अगर इस पूरे कॉल को समराइज करें तो दो तीन बड़ी बातें. 24,800 का ध्यान रखना है, उसके नीचे निफ्टी में प्रेशर जब तक उसके ऊपर है तब तक ठीक है. बैंकिंग कंपैरेटिवली वीकर है, उसमें 54,900 54,900 को अपने को ध्यान रखना है. उसके नीचे वहां पे भी प्रॉब्लम है. आईटी और बैंकिंग का कॉम्बिनेशन बेसिकली उस पर फोकस रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए. बट इन सब के बीच में आपके जो ऑटो एंसिलरी रिलेटेड काउंटर्स selectively from the FMCG, pharma, in सभी में strength है. Stock specific, we talked about Ashok Leyland, Exide, and on the negative side, Asian Paint is something that one can consider. All right, so with this, the presentation ends. So let's start with a quick feedback poll and then we can start with the Q&A. So please fill in your feedback and then you can start posting your questions using that Q&A button. तो अपना फीडबैक देने के बाद कोई भी आपका जो सवाल है आप Q&A बटन में लिखकर पूछ सकते हैं. Those who are done with the feedback, they can start posting their questions using the Q&A button. जिनका हो गया है, फीडबैक दे दिया है, वो अपना सवाल लिखकर पूछ सकते हैं. Okay. All right. So we are almost done. So let's start with the Q&A now. See, आपको हैंड रेज नहीं करना है, लिखकर पूछना है अपना सवाल. आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन मार्क का बटन है, नियामी जी. So you can use that button. उसको आप क्लिक करना है and you can write your questions. Okay, so first we have question from Mr. Ashok कि अब मार्केट में स्टेबिलिटी कब तक आ सकती है. अभी तो एनालिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं मार्केट्स के विरुद्ध चल रहा है. देखिए अशोक जी, व्हेन इट कम्स टू predicting the market, obviously
इंस्टेड ऑफ प्रिडिक्टिंग रादर यू शुड फॉलो। मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्केट को प्रिडिक्ट करना नहीं, मार्केट को फॉलो करना एक ज्यादा बेटर अप्रोच होता है। एटलीस्ट मैं उसको काफी टाइम से यही फॉलो करता हूँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेवल जैसे हमने अब ये डिसाइड कर लिया कि 24,800 के जब तक ऊपर है तो ठीक है बाजार, उसके नीचे जाएगा तो फिर मार्केट में करेक्शन, दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग, नेगेटिविटी, वो सब शुरू हो जाएगी। आपको अपने रिस्क को मैनेज करना है। मैं हमेशा इस वेबिनार के थ्रू यही बात करता हूँ कि फॉरगेट अबाउट किसी एनालिस्ट ने क्या कहा या मैंने क्या कहा, आपको अपने रिस्क को मैनेज करना है। अ, ये एज्यूम कर लेना कि पहले ये ऊपर जाएगा स्टॉक, या पहले ये इंडेक्स ऊपर जाएगा उसके बाद ये नीचे आएगा, तो पहले मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा, उसके बाद यू नो या फिर नीचे जाने के लिए अगर शॉर्ट कर रखा है तो ऐसा ही होगा। वो चीजें नहीं होती है। ट्रेडिंग का मतलब है खास तौर से आपका रिस्क को मैनेज करना और लॉन्ग रन में इस चीज को मेंटेन करना, डिसिप्लिन्ड रहना। तो आपको किसी से भी मतलब नहीं होना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है। अगर आपने लेट्स से कि किसी के व्यू को सुना और आपको लगता है कि हाँ मेरा भी व्यू वही है और उसके हिसाब से मैं अगर करता हूँ कुछ ट्रेड करता हूँ, आपका स्टॉप लॉस आपको बचाएगा, ना कि किसी का व्यू। तो किस तरीके से आपको हेज करना है या किस तरीके से आपको स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मार्केट में दोनों साइड पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऑब्वियसली। उस तरीके का अब वो सिनेरियो नहीं रहा कि एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव मिल रहा था मार्केट में यू नो लास्ट अक्टूबर से पहले तक। तो वो चीज अभी नहीं दिख रही है होते हुए। और मुझे लगता भी नहीं है कि वो शायद नियर टर्म में आपको देखने को मिलेगा, जब तक कि अर्निंग्स वापस नहीं आती है। मतलब अर्निंग्स का बहुत सब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा तब जाके मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव देखने को मिलेगा। अदरवाइज इस तरीके के स्विंग्स देखने को मिलते रहेंगे जो कि मार्केट को और आपको अनसर्टेन करेंगे कि हाँ 2 दिन तेजी, एक दिन फिर दोबारा से मंदी और इसमें प्रॉफिट चला गया। तो यहाँ पे रिस्क मैनेज करना इज मोर इम्पोर्टेंट। सो होप इट आंसर्स योर क्वेरी। एनोनिमस अटेंडी, इनका भी यही सवाल था, तो आई होप इट आंसर्स योर क्वेरी कि इस मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करना है आपको। ओके, so जी has this question, what is your view on cement space? I'm holding Deccan Cement. Okay. uh, See again, cement is among the top performing sectors in the recent times. Obviously I'm not following this stock, Deccan Cement, so okay, so this stock has done well in line with what we are seeing in the other, uh, you know, most of the cement counters. I don't see any reason of booking profits until the stock breaks 1,000 level. So 1,000 should be your trailing stop in case if you have any existing position and if you're planning any. And on a higher side, the upside is open. Means since it's trading at the record highs, so the upside is open. So keep on trading your stop losses on rise is something that we recommend. Okay, next. See, Ashok ji, again you have another query, and this shows basically कि challenge कहाँ पे आ रहा है। आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, फंडामेंटल को और स्टॉक के मूव को। किसी कंपनी की, जैसे कि आपने बेल के बारे में लिखा है, बीईएल के बारे में कि डिफेंस स्टॉक है, बहुत अच्छी ऑर्डर बुक है, तब भी वो नीचे क्यों आ रहा है? देखिए वो सब चीजें जो प्राइस में ऑलरेडी बिल्ट इन हो जाती हैं। ये सब न्यूज काफी टाइम से चल रही थी कि भाई डिफेंस डिफेंस डिफेंस। तो कोई भी चीज जो अगर ऊपर जा रही है तो वो लगातार ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हर चीज, चाहे आप कोई एक आसमान में आप बॉल भी उछालेंगे तो वो भी एक लिमिट में ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे नीचे आना शुरू कर देगी। राइट, सो सेम होल्ड्स ट्रू फॉर मार्केट ऑल्सो। द मोमेंटम गोज फॉर अ सर्टेन पीरियड एंड देन कम्स डाउन। उससे ना कंपनी खराब होती है, ना ही कुछ और चैलेंज होता है। इट्स जस्ट दैट कि मार्केट को लगता है कि इन लेवल्स पे वो अभी वायबल नहीं है, तो वहां प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है, या फिर मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो में प्रेशर है तो उसकी वजह से प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है। सो ट्रेडिंग और इन सब चीजों को, फैक्टर्स को नहीं, ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉसेस दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर मैंने 300 पे लिया है तो मैं 280 के नीचे निकल जाऊंगा। आपको कोई भी ऑर्डर बुक या कोई चीज नहीं बचा सकती। अगर अ, इन सब चीजों को देखते हुए आप चलेंगे कि हमेशा ही कोई ना कोई कंपनी में कुछ ना कुछ होता रहता है, तो फिर एन नंबर ऑफ स्टॉक्स आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। राइट, तो वो
ये आपको आंसर हेल्प करेगा. Yes, so Snehansh, this is true that government is proposing, or the panel has focusing on certain different uh, increase in the GST for sin products like cigarettes and liquor, online gaming, and all. So that's the reason why we were seeing that ITC was among the top loser this week. So what kind of impact that most of these stocks would see on their balance sheet is something that would time only tell. And once we have the fine prints of the new GST rates, but as of now, yes, the tone looks negative. And some of these stocks, they have already seen sharp correction. So we might not see the further dent in those names, but those stocks which are holding strong within this particular category, they might continue to read in the pressure. At least for a time being now, one should refrain from any aggressive longs. Mahendra Kumar ji, if you are associated with us with Religare, we keep on sending our recommendation through our apps, through our branches, business partner. So that is there. Today we have discussed about few stocks. It's not a trading or investment recommendations. So as per your discretion, you can look for long position or short positions accordingly. Okay. Again, same for long term. If you just go and check on Religare's trading app, Dynami or Leap, you will find recommendations. So if you are a client, you can just log in and check what stocks suits you within that list, and you can invest. Thank you, Abhijit, for appreciating the work. And healthcare sector is your query. So healthcare looks positive, and pharma and healthcare impact both means Apollo Hospital. Fortis looks slightly stretched, so we might see some profit taking. Then we have Narayan Hrudayalaya also, wherein we have seen very strong surge. So there could be a bit of consolidation, but the trend is likely to remain positive. So for 1 week, I don't think that uh, there'll be much action. But if your view is, let's say, for 3 to 6 months, definitely you should stay put. Vipul Parikji, Trump effect is almost done now. Means whatever we have heard around 50% tariff and everything, that is behind us now. Means we are anyways looking for alternatives, and it's not that the impact will not be there, but on our market is going to be limited, because if you see the stocks or the businesses which will be impacting most are not listed. Majority of the companies in gems and jewelry segment or textile, very limited number of stocks that we have, and they have negligible weight on the index and market overall. So I don't think that it will have a meaningful impact on markets. Sentimental, yes, that we have already seen. So I guess it is done when it comes to the fresh impact related to tariffs and other related news. Niyami Adarji, again, if you are associated with us, you can just check the app, Religare Dynami app or Leave app, and you'll get the recommendation. This webinar is largely for giving you an overview where one can look to fresh shorting or buying opportunities, but it's completely on your discretion. It's not a trading or an investment recommendation. Okay. There's a lot of. So yes, we have a YouTube channel, Religare Online. If you search on YouTube, this webinar or other
like media related links or several other posts are there. So you can definitely go on YouTube and check all this. Okay, Pritesh ji has this query on exchange related stocks. Yes, so this week, after this news of further consultation paper on derivative contracts on a higher duration, that dented the sentiments in some of these exchange related counters and capital market related counters too. Uh, Again, it's a consultation paper. Obviously, there'll be rounds of discussion, and then things will be like we'll get the clarity over this. So I'm not an expert to that how this thing is going to pan out, and but in case if it happens, obviously it's going to be negative for the exchanges. Uh, the dent and the quantum obviously will come to know once we see the fine print. So short term, you should definitely refrain from aggressive positioning in exchange related stocks. Okay, Santosh, is the broader market overvalued till now, and can we remain overvalued further? So that's a very important question. So yes, if you see that though we were seeing stocks from the mid cap and small cap also inching higher of late, but it's a very selective participation overall. It's not that we were seeing broad based, though the number says otherwise, means we were seeing that 1500 stock on by advancing side, 700 on odd names on the declining side. But in those 1500, less than 1% kind of gains or similar to that is something that majority of the stocks used to witness. It's not very strong gains. As we all know that the SIP continuation to small cap, mid cap funds, so obviously the fund manager have the obligation to utilize that. So that's the reason why we were seeing that this move continuing, but the overvaluation concern is still there. Will they remain overvalued? That depends on earnings. So means in the coming quarters, in case if we see uptick in the earnings, then probably yes, this overvaluation might continue. Okay. ये रिपीट यूट्यूब चैनल का जब आपका रिलीगियर ऑनलाइन आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे जाके और वहां पे आपको मिल जाएगा रिलीगियर ऑनलाइन, ये आपको सर्च करना है. Okay, next we have Vipul ji has this question, why FII is not coming? So obviously I chase return. Being an investor, be it FII, DII. DII, obviously I have a limitation that I can't go beyond certain limits, certain geographies and all. But FIIs, they don't have this kind of limitation, right? They can go to any market. And our markets are underperforming, this year so far. So that's why they are investing in the other markets wherein they are getting better returns. So once we have the earnings back in our market, starting next quarter onwards probably, then you'll see that FIs will also come back and start investing in big way. But as of now, there's no indication as such. Plus all this, geopolitical issues and other things are also going on. So that's the reason why they are staying away. But eventually they have to come back because our markets, the way we are growing and the long-term potential is something that one cannot neglect. Okay. Okay, so majority of the queries that we have answered. There were a few stock-specific queries, so please excuse because otherwise the session is not going to end. And we usually try to end this in 35-40 minutes so that it gets you get the maximum return out of this 40 minutes that you invest here. So if you are associated with us, you can send your queries to your branches, your business partner, and they'll share it with us. So आपका कोई भी सवाल जो स्टॉक स्पेसिफिक है और आप एसोसिएटेड है हमारे साथ रिलीगर के साथ, तो आप अपना सवाल अपने ब्रांच के और बिजनेस पार्टनर के साथ आप शेयर कर सकते हैं, वो हमसे पूछ के आपको जवाब दे देंगे.
So with this, we end this session. Next week is going to be a different week, means the monthly expiry that is scheduled on 28th. So it will be a derivative session for that. So for our this video on market analysis, you can check our YouTube channel and Instagram handle Religare Online Cup. There you will get the video. So with this, thank you everyone for participating.